Floods struck the Indus River system following heavy monsoon rains at the end of July 2010, sweeping much in their path from the north of the country down to the delta. अब असांखे चयईं वॾेरो चए न निकिरो पाणी नाहे वरी जो पाणी आने मुंहुं ॾिनो अलाह ॾिसे थो असां पेरे उघाड़े ने थां ने थुपो इन्ही लटनि रोईंदा पिटींदा इहे ॿालड़नि खे गेलींदा झटपट तुरी विया जहाज़ वागो कंदो आहे ईअं आवाज़ कंदो आहे पर पाणी 7 फुट हुयो जेसिताईं हे वरी रोड जो पाणी हलियो वञी तव्हां जेसिताईं क्रॉस करे रोड तेसिताईं पाणी असां छबर ॿबर ॿुॾी वियासीं कुछ भी न बचो जेकॾहिं असांजा ॿार बचा हे हो रड़ियूं पिया कनि तव्हां पिया कनि दहिलजी विया ॿार एॾा परेशान थी वियासीं त हाणे छा कयूं. It is estimated that 18 million were displaced, many of whom were stranded as the river enveloped them. 70 लाख लोग बेघर हुए थे सिंध में सैलाब की वजह से और उसमें से आधे लोग हुकूमत के कैंप्स में थे. बहुत सारे सड़कों पर ही थे. जो मवेशी लेके अपने साथ आए थे वो कैंप्स में नहीं आ रहे थे क्योंकि कैंप्स में मवेशी का इंतज़ाम नहीं था, वो सड़कों पे ही थे. There was danger of mass hunger and disease as millions of people lost their homes, assets and livelihoods, and entire communities were without their usual support systems. कोई काथे वेठो कोई फंड कोई मानी जहाजन ते ॾियनि पिया ग़रीबनि खे वीचारनि खे बाक़ी त न हुई का शइ देगड़ी बि न हुई जो बोड़ चाढ़े माण्हू खाइनि या बचड़नि खे खाराइनि. क्योंकि ये तबाही बड़ी थी. शिकारपुर शहर में 50,000 से ज़्यादा लोग रोडों रस्तों स्कूलों में आके ठहर गए थे और माइग्रेशन हुई थी. कुछ लोग सखर चले गए, कुछ लोग कराची चले गए. While government, international organizations, civil society and communities struggled to deal with minimal needs like food and healthcare, what was known in theory became obvious in a graphic manner. How well you cope with disaster depends on how strong your systems are under normal conditions. Floods brought the people out and also revealed the extent of human suffering routinely experienced in the country. सैलाब ने तो सिर्फ एक ढक्कन हटाया है. सूरत हाल तो पहले भी वहाँ वैसी ही थी. ऐसा लगता था कि जैसे हुकूमत की जो भी सर्विसेज हैं वो चाहे तालीम की हों, चाहे सेहत की हों, चाहे जच्चा बच्चा वाली हों, वो शायद इन लोगों से छू के भी नहीं गुजरेंगी. तो जब हम लोगों ने ये रिलीफ़ का काम किया तो फिर हमें ये हुआ कि ये तहकीक करनी चाहिए कि आया ये जो लोग आए हैं उनकी ज़िंदगी सैलाब से पहले क्या थी, उनके पास क्या चीज़ें थीं, क्या उनकी महरूमियाँ थीं. Surveys of displaced people showed that their levels of undernutrition were amongst the worst in the world,
even before the flood. Surveys also showed that majority of the households in the flood-affected regions of the country own neither agricultural land nor the land that they live on. हमने अपने टेंट सिटी के अंदर हमारे खैरपुर में 195 फैमिलीज़ थी और हमने उनके जब एक डेटाबेस बनाया था और ये मालूम किया था कि इनमें से कितनों के पास ज़मीन है, तो उसमें से 3 या 4 ने कहा कि उनके पास छोटी मोटी ज़मीन है, बाकी तमाम लोग जो थे वो बेज़मीन किसान थे। और फिर हमने उनसे पूछा कि फिर आप किसकी ज़मीन पे काम करते हैं, तो आप हैरान होंगी कि उसके अंदर पूरी सिंध असेंबली और नेशनल असेंबली के हारे हुए और जीते हुए मेंबरान के नाम थे। हमारे शिकारपुर में तो महर सरदारों का इतना ज़्यादा असर है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या कोई दूसरा भी डिपार्टमेंट हो, वो उनकी मर्ज़ी के बगैर जो है वो कुछ भी नहीं करता। कब्ज़ा उनका हो गया, नाम किसी का भी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो जिसका कब्ज़ा हो जाता है वही उसकी जो फसल भी उठाते हैं, और वो बेचारे जिनकी ज़मीन होती हैं हकीकी तौर पर, वो उनको मिन्नतें करते ही रह जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। And just as the floods revealed the extent of human suffering, they also revealed the prevailing inequalities between men and women, the able-bodied and the frail, landlords and tenants, dominant groups and so-called low castes, and the distance between the state and its citizens. All these dimensions of inequality have been ever present, and while distinct, are also closely connected with one another and with how the state relates to citizens. In the normal course of things, the state works for the powerful and against the weak. Policies are directed at benefiting the elite. A major portion of resources go towards defense at the cost of education, health, and poverty reduction. Even the development that is carried out favors the interest of the few. अगर आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स भी देखें तो उसमें भी आपको ये नज़र आएगा कि सिर्फ उन्हीं शोबों पर फोकस किया जाता है जो बहुत मखसूस तबके को फ़ायदा पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि हायर एजुकेशन बजट अगर हम देखें तो उसमें हायर एजुकेशन बजट जो है वो प्राइमरी एजुकेशन से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, हालांकि वो सिर्फ एक बहुत ही मखसूस तबके को केटर करता है। इसके बाद अगर आप इस साल का जो इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस बनाई जा रही है उसका बजट देखें और पूरे मुल्क के हेल्थ केयर का बजट देखें तो वो तकरीबन बराबर हैं। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि जो आपके हुक्मरान हैं, जो आपकी स्टेट है, वो बिल्कुल ही लोगों की ज़रूरियात से, लोगों की जो डिमांड्स हैं उससे बिल्कुल ही डिसकनेक्टेड हैं और सिर्फ अपने ही रास्ते पे चले जा रहे हैं। The flood revealed this harsh reality as vividly as it showed the extent and depth of human suffering and deprivation in the country. For many people, this was the first time they had access to any modern services such as health, water and sanitation, and education. So displacement led to exposure to development. For many women, this was an occasion of being able to step out of the gender-segregated spaces maintained in patriarchal communities. बहुत सारी औरतें थी जो कभी अपने गांव से नहीं निकली थी, यानी छोटे शहर जो है गढ़ी खैरो वगैरह वहाँ भी नहीं गई थी, जो शायद उनके गांव से 5-10 किलोमीटर दूर था, कभी नहीं गई थी। कैंप्स में आके उन्होंने एक नई दुनिया देखी। टेंट में एक औरत के साथ, तो उसकी बेटी आई कहीं से, वो कुछ 18 साल 20 साल की उम्र होगी, तो माँ बेटी को डांट रही थी कि सारा दिन तुम कैंप में घूमती रहती हो, तुम्हारी मंगनी हो गई है, तुम्हें कारी कहकर मार देंगे। तो बेटी ने जवाब दिया, अम्मा पहली दफ़ा आज़ादी मिली है, मुझे मज़े लेने दे। Under conditions of democratic accountability and wide and unhindered media coverage, people were confident in making demands for their rights.
Disaster relief and rehabilitation was no longer seen as a matter of chance or charity, but as a legitimate expectation of citizens from the state. The government's response in terms of the Watan Card cash transfer was an acknowledgement of this entitlement. At the same time, its failure to implement the compensation program fully reflects its deep disregard for citizens' welfare. वतन कारक बाबा कृष्ण कहीं जाने निकतान कहीं जाने रन जालांगलाई हेट्रे रसा रन मिस्किन ये वतन कार्ड है। हमारे गांव में कुछ लोगों को किसी के आए थे भी 20,000 रुपये, तीसरी किस्त भी 20,000 रुपये मिली। वो कुछ लोगों को बना 3 किस्तें मिली, बाकी सारे लोगों को एक किस्त मिली। There were complaints about government mismanagement in overall relief work, and while many of them were justified, they also showed that in regions dominated by tribal and feudal chieftains, even the most marginalized individuals had started to see themselves as citizens with claims on the state, or parties to a social contract. The impact of the disaster persisted for a long time for many of its victims. In many places, physical conditions were still not restored, water was still present, and infrastructure was not rebuilt. People reverted back to situation before floods or worse, with non-functioning health facilities and schools. हमारे इलाके में क्या मसले ज़्यादा हैं, मगर जो है हमारे पास गैस भी नहीं है और बिजली भी जो है उसकी भी कच्ची लाइन है, कभी चलती है, हवा थोड़ी आती है तो वो भी चली जाती है, 2-3 दिन बिजली नहीं आती। इधर जो है हमारे पास ये ज़्यादातर मसले ये बड़े हैं। अस्पताल ना है अब हाल हाणे एकड़ो खर्च कयूं जे के बाद वनी दवा दवान जो कयूं जा मिसाले डॉक्टर जो कयूं जा किरायो कयूं ना है सहूलत। The possibility of a new social contract between the citizens and state was glimpsed briefly, but not yet realized. और जो उस वक्त के भी फ़वाइद थे जो हो सकते थे उनको कैपिटलाइज नहीं किया गया। उस वक्त बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी जो सिंध में देहात का स्ट्रक्चर है उसमें तब्दीली की जा सकती थी। जो गरीब काश्तकार है या जो गरीब लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा मसला उनकी रिहाइश की जगह की ओनरशिप का होता है, तो ओनरशिप को सही तरह से डिटरमिन किया जा सकता था। नए गांव डिज़ाइन किए जा सकते थे जिनकी साइज़ बड़ी हो ताकि वहाँ सर्विसेज पहुँचाना आसान हो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं हुई। The flood's impact was also magnified by unequal social structures and power dynamics in many places. Poor, displaced people found that powerful interests used the floods to grab resources from them. While big landlords lobbied to have their loans written off, many of them were not willing to extend the same relief to their own tenants and workers. असांजे वॾेरे साथ नहीं पे ॾींदे आहिनि, जेको थींदा पे आप खा वेंदे आहिनि, जेको मिलंदा पे ने आप के रख छोड़ींदे आहिनि। असांखे नथा ॾियनि पिया, कुलो नथा ॿधनि, जेको अचे थो बसि हड़प। हा, जेको तव्हां असांखे ॿधो त उहो शुकुरु कंदासीं असां। मगर असांखे ॾिसकनि ॾिए थो न अचे थो, मतिलबु कुझु छा चवनि छा न चवनि, ईअं थी असांखे कॾहिं न ॾिनो अथऊं। अचे थो सक अचनि खाई था वञनि। There were widespread allegations that powerful elements from the government and the military had made breaches in embankments to divert the gushing water away from their land and property to prevent damages. The allegations were so strong that the Supreme Court, responding to petitions filed by public representatives,
took a suo motu notice setting up an inquiry commission to investigate the charges. This was in addition to commissions set up by the provincial governments. Though the allegations were not supported for lack of evidence, the commissions noted mismanagement and a highly inefficient response to the floods by the related government departments. Natural disasters will continue to visit us, often without warning. Economic development may be about harnessing nature, but it has to be done keeping ecology in mind. The blatant disregard for ecology, evident in the development path adopted by the state, will extract a price. Unfortunately, it is the poor and the marginalized that end up paying it. Pakistan's civil society, while calling for stronger disaster response, proposed a citizens' charter, a reforms agenda that advocates empowered citizenship based on equitable distribution and ownership of resources. जब कभी डिज़ास्टर या आफात स्ट्राइक करती हैं तो सबसे पहले स्टेट को हरकत में आना पड़ता है और उस वजह से उसकी जो इंस्टीट्यूशन का काम है, उनकी क्वालिटी है, एफिशिएंसी है और उनका अवामी होना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें रीजनल तौर पे डिज़ास्टर को रिस्पॉन्ड करने के लिए नेटवर्क्स बनाने होंगे, जॉइंट वर्किंग करनी होगी, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस के मौके ढूंढने होंगे। तीसरा एरिया जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है वो सोशल सिक्योरिटी है। ये बेसिकली मिनिमम इनकम बेस है जो हर शहरी का एक हक होता है। हमारे आइन में भी इसकी बात की गई है। तो अगर आपके पास एक सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम हो जो तमाम पॉपुलेशन को बिला तफरीक कवर करेगा, तो इससे ये होगा कि न सिर्फ कुदरती आफात बल्कि नॉर्मल डेज़ में भी लोगों के पास एक मिनिमम इनकम बेस होगी जो लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं गिरने देगी, या सहारा मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। As the Indus floods showed, disaster preparation and response are not only technical issues. They are deeply connected with the normal condition of human life, notably the physical health of women and children. More importantly, the effectiveness of disaster response is connected with social equality and the quality of the social contract between state and citizen. तीन तरीके हैं। एक तो ये कि इनकलाब आए, इनकलाब के वो आसार नहीं हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो रॉ मटेरियल होता है रेवोल्यूशन का, वो मौजूद नहीं है। दूसरा ये है कि कानून साजी की जाए, चूँकि यही वडेरे असेंबली में बैठे हैं और यही ताकतवर है, तो कानून साजी भी नहीं हो सकती है। तीसरा ये है कि अगर शहर डेवलप होना शुरू हो, मैं छोटे शहर की बात कर रहा हूँ, अर्बनाइजेशन में इजाफ़ा हो, तो लोगों के पास एक मुतबादिल रोज़गार का रास्ता होगा। जो सबसे बड़ा लिंक है ना, वो ये कि पाकिस्तान की जो दरमियाना तबका है, जो मिडिल क्लास है, ख़ास तौर पे जो शहरी मिडिल क्लास है, उसका रब्त जो है गरीब आवाम के साथ टूट चुका है। अगर वो रब्त किसी तरह से सियासी अमल के ज़रिए कोई पार्टी बहाल करे, तो वहाँ से फिर गरीबों की आवाज़ भी आगे तक पहुँचेगी और पॉलिसियाँ भी असरअंदाज करने लगेंगी। होना ये चाहिए कि बजाय इसके कि दिफाई बजट में आप इजाफ़ा करें या उस सेक्टर में एलोकेशन आप ज़्यादा दें, आप उन सेक्टर्स को आगे बढ़ाएं, उनमें तरक्की दें जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त अवाम से है। वहाँ पर जो बहुत से जो लोग हैं वो अपने वोट के पावर को, ताकत का अंदाज़ा उनके पास नहीं है। ये इलेक्शंस होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए, और जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन है उसमें लोकल लीडरशिप आती है, ये भी होने चाहिए। अगर कोई जीत नहीं सकता है, लेकिन काउंटर मुकाबला तो होगा, और एक जज्बा तो बढ़ेगा, एक मतलब डेयर तो होगी, तो आगे जाके वो होगा। इलेक्शंस इस मुल्क का बार बार होना, लोकल बॉडीज़ हो या जनरल इलेक्शंस, ये होंगे तो इससे ज़्यादा आगाही होगी।